पीछे इस प्रकार चलते जैसे कि वो अपने कोई शिष्य अपने गुरु के पीछे पीछे चलता है। Apologies for those who listen later on. I just remembered to press the record button. Okay, now next page. Now Srimati comments, for circumstantial reasons, the elder Brahmana was unable to fulfill his promise. और उसके बाद फिर महादेवी माता जी लिख रही हैं कि कुछ ऐसे कारण बने, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि जो बूढ़ा ब्राह्मण था वह अपने वचन को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। So the young one returned to Vrindavan to seek Gopal's help. तो फिर जो जवान ब्राह्मण था वो वृंदावन लौटा है गोपाल जी की मदद लेने के लिए। First, he offers his respectful obeisances to the deity and then narrated everything in full detail. तो फिर जब वो जवान ब्राह्मण जब वृंदावन आए गोपाल जी के विग्रह के सामने, तो सबसे पहले उन्होंने उन्हें अपना प्रणाम अर्पण किया और उसके बाद उन्हें सारा सब कुछ बताया जो भी हुआ। So if you remember, it was the Brahmana's wife and particularly the Brahmana's son who didn't want this young Brahmana to marry this sister. तो क्या हुआ था कि जो बूढ़े ब्राह्मण के पत्नी थी और पुत्र था, वह नहीं चाहते थे कि उनकी जो बहन है और बेटी है वह इस गरीब ब्राह्मण के घर में, मतलब जो जवान ब्राह्मण था वो थोड़ा गरीब था, कि उसके घर में उसकी शादी हो। So the young Brahmana addressed Gopal, my dear Lord, you are the protector of Brahminical culture and you are also very merciful. Therefore, kindly show me your great mercy by protecting the religious principles of us two Brahmanas. तो फिर जो जवान ब्राह्मण थे उन्होंने गोपाल जी के सामने बोला कि तुम बहुत ज्यादा कृपालु हो और तुम ब्राह्मणों की और उनकी वचनों की रक्षा भी करते हो, और तुम प्लीज मतलब कृपया करके हम इस सिचुएशन को, मतलब इस परिस्थिति को संभालो ताकि जो ब्राह्मणों का धर्म है वह अपने धर्म से नीचे ना गिर जाए। My dear Lord, I'm not thinking to become happy by getting the daughter as a bride. मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरे को उनकी पुत्री अपनी पत्नी के रूप में मिल जाएगी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। I'm simply thinking that the Brahmana has broken his promise and that is giving me great pain. और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तो इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि उन ब्राह्मण ने मुझे वचन दिया था और वह अब उस वचन को तोड़ रहे हैं, तो ये चीज मुझे दुख दे रही है। The young Brahmana continued, my dear sir, you are very merciful and you know everything. Therefore, kindly be a witness in this case. तो फिर जो जवान ब्राह्मण है वह गोपाल जी को बोलने लगे कि तुम सब कुछ जानते हो, तो कृपया आओ और इस परिस्थिति में आके साक्षी बनो, प्रमाण बनो। A person who knows things as they are and does not bear witness becomes involved in sinful activities. It's a way to speak to Krishna. तो जिस व्यक्ति को सारी सच्चाई पता हो लेकिन फिर भी वह उस चीज का साथ ना दे, उस सही चीज के लिए खड़ा ना हो, तो वह भी पाप का भागीदार बन जाता है। Lord Krishna replied, my dear Brahmana, go back to your home and call a meeting of all the men. In that meeting, just try to remember me and I will certainly appear there. तो गोपाल जी के विग्रह ने उनको उत्तर दिया कि जाओ अपने गांव वापस जाओ और वहां पे सब सारे लोगों की एक बैठक बिठाओ, और वहां जब बैठक बैठेगी तो तुम मुझे वहां याद करना, मैं जरूर आऊंगा। The young Brahmana replied, my dear sir, even if you appear as a four-handed Vishnu deity, still none of those people will believe your words. तो वो जो जवान ब्राह्मण है वो बोलने लगा कि अगर तुम गोपाल जी से कहने लगा कि अगर तुम चतुर्भुज विष्णु के रूप में भी वहां आ जाओगे तब भी तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। Only if you go there in this form of Gopal and speak words from your beautiful face will your testimony be heard by all the people. तो ब्राह्मण ने बोला कि यदि गोपाल जी से बोला कि यदि तुम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पे आप अर्च विग्रह के रूप में स्थित हो, अगर आप इसी तरीके से अगर वहां पे आओगे और अपने सुंदर मुख से ये सारी बातें बोलोगे तो सब आपकी बातों पे विश्वास कर लेंगे। So Lord Krishna says, I have never heard of a deity's walking from one place to another. तो भगवान कहने लगे मैंने तो ये कभी नहीं सुना कि एक अर्च्य विग्रह एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पे चले जाएं। The Brahmana replied, this is true, but how is it that you are speaking to me, although you are a deity? तो ब्राह्मण कहने लगा कि ठीक है, आप जो कह रहे हो वो बात भी ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक विग्रह ही हो तो आप मेरे से बात किस प्रकार कर पा रहे हो? My dear Lord, you are not a statue. You are directly the son of Maharaj Nanda. तो ब्राह्मण बोलने लगे कि नहीं, तुम सिर्फ एक मूर्ति नहीं हो, तुम तो नंद महाराज के पुत्र हो। Now, for the sake of the old Brahmana, you do something you have never done before.
तो वो कहते हैं कि उस बूढ़े ब्राह्मण को बचाने के लिए कुछ ऐसा करो जो तुमने पहले कभी भी नहीं किया। Gopal then smiled and said, "My dear Brahmana, just listen to me. तो फिर गोपाल हंसने लगे और बोले, मेरे प्रिय ब्राह्मण, अब मेरी बात सुनो। I shall walk behind you, and in this way I will go with you." तो फिर गोपाल जी के मित्र बोलने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ, इसी तरीके से जिस प्रकार से मैं यहाँ बैठा हूँ। Gopal, yeah, okay. The Lord continued, "Do not try to see me by turning around. As soon as you turn to see me, I will remain stationary in that very place." तो, तो गोपाल जी ने बोला ब्राह्मण से कि ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ, लेकिन पूरे रास्ते तुम मुड़ के मत देखना, क्योंकि जहां भी तुम मुड़ के देखोगे मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा, वहीं पे रुक जाऊंगा। You will know that I'm walking behind you by the sound of my ankle bells. और तुम्हें ये पता लगता रहा कि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ मेरी पायल की आवाज से। Cook 1 kilo of rice daily and offer it. I shall eat that rice and follow behind you. तो भगवान कह रहे हैं कि रोज 1 किलो चावल बनाओ और मुझे भोग लगाओ, और मैं हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। The next day, the Brahmana begged permission from Gopal and started for his country. तो फिर अगले दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मण asked permission from गोपाल, और गोपाल asked Yeah, permission। no, the Brahmana begged permission from Gopal and then started his परमिशन, journey. Yeah. तो फिर ब्राह्मण ने गोपाल जी की परमिशन ली, अनुमति ली, और फिर साथ साथ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। Gopal followed him step by step. और गोपाल उनको उनके पद चिन्हों पे चल रहे थे। While Gopal was following the young Brahmana, the tinkling sound of his ankle bells could be heard. This is giving me goosebumps. तो जब जब ब्राह्मण चलने लगे तो फिर गोपाल उनके पीछे पीछे चलने लगे, और उनकी पायल की आवाज ब्राह्मण को सुनाई दे रही थी। Brahmana became very pleased and he cooked first class rice for Gopal to eat. और जो ब्राह्मण है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया, और फिर उन्होंने बहुत बढ़िया से चावल बना के भगवान को भोग लगाए। So walking and walking in this way, eventually they reached the country of the Brahmana. और उसके बाद इस प्रकार चलते 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 वह जहाँ पे वे ब्राह्मण रहते थे वहां पे पहुंच गए। Now Srimati adds in before she changes the page. There Gopal bore witness for his devotee, and the very complex problem was very quickly solved to the full satisfaction. तो फिर उसके बाद श्रीमती माता जी आखिरी में लिख रही हैं इस पन्ने में कि जो गोपाल है वह अपने भक्त के लिए प्रमाण बने, और फिर उसके बाद उसकी इतनी कठिन परिस्थिति में भी उसकी मदद करके उसको फटाफट से आसान कर दिया। Okay, so now there's another story about Gopal. तो ये अलग स्टोरी है अब गोपाल जी के बारे में। So thus Sakshi Gopal stayed at Vijayanagara, accepting the service for a very long time. और उसके बाद फिर जब इस प्रकार साक्षी गोपाल जी विद्यानगर पहुंच के साक्षी गोपाल हुए, तो वह वहां पे काफी समय तक रुके और सेवा स्वीकारते रहे। Later there was a fight and the country was conquered by King Purushottam Dev of Orissa. तो उसके बाद फिर वहां पे कुछ युद्ध हुआ, और उसके बाद वो विद्यानगर जो है वो राजा पुरुषोत्तम देव जी के हाथों में आ गया। The king was victorious over the king of Vijayanagara, and he took possession of the throne, the Manikya Singhasan, which was bedecked with many jewels. माणिक्य सिंहासन। Manikya Singhasan, हाँ. ओके, तो फिर क्या हुआ कि वो जो राजा पुरुषोत्तम देव थे, वो विद्यानगर के जो पहले के राजा थे उनसे युद्ध में विजय हुए और उनके सिंहासन पे बैठ गए, जिसका नाम था माणिक्य सिंहासन, जो कि बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात से सजा हुआ था। King Purushottam Dev was a great devotee and advanced in civilization of the Aryans. तो जो पुरुषोत्तम देव थे वो बहुत महान भक्त थे और आर्यंस की तरफ से थे, उसके अंदर काफी ऊंचे स्तर पे थे। So he begged at the lotus feet of Gopal, "Please come to my kingdom." तो फिर जो पुरुषोत्तम देव हैं वे क्या कहते हैं उसे गोपाल जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि कृपया करके मेरे राज्य में आ जाइए। When the king begged him to come to the kingdom, Gopal was already obliged for his devotional service, accepted his prayer. तो जब राजा ने ये प्रार्थना करी तो जो गोपाल जी हैं वह पहले से ही राजा से प्रसन्न थे, तो उन्होंने राजा की जो प्रार्थना है उसे स्वीकार कर लिया। The king took the Gopal deity and went back to Katak. वेयर कटक। Katak. कटक,
ओके, तो जो राजा थे उन्होंने गोपाल जी के विग्रह को उठाया और अपने राज्य कटक में वापस लौट आए। When the Gopal deity was installed at Katak, the queen of Purushottam Dev went to see him and with great devotion presented various kinds of ornaments. तो उसके बाद फिर जब राजा पुरुषोत्तम देव जब कटक में गोपाल जी के विग्रह को ले गए, तो उनकी जो पत्नी थी, जो रानी थी, वह आई और उन्होंने भगवान को बहुत भक्तिमय भाव से बहुत सारे जेवर प्रस्तुत करे। The queen had a very valuable pearl which she wore on her nose, and she wished to give that to Gopal. और जो वह उनकी रानी थी, राजा की जो रानी थी, उनके पास एक बहुत ही Pearl. मोती था, बहुत ही महत्वपूर्ण मोती था, जो वह गोपाल जी को देना चाहती थी। She began to think as follows: if there was a hole in the deity's nose, I could transfer the pearl to him. तो फिर वह रानी सोचने लगी कि यदि गोपाल जी की नाक में छेद होता तो मैं ये मोती उनको दे पाती। Considering this, the queen offered her obeisances to Gopal and returned to her palace. और ये सोचते सोचते रानी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने महल में वापस लौट आई। That night, she dreamed that Gopal had appeared to speak to her as follows. तो उसके बाद फिर उस रात जो गोपाल जी थे वह रानी के सपने में आए। During my childhood, my mother made a hole in my nose and with great endeavor set a pearl there. तो गोपाल जी बोलने लगे कि जब मैं छोटा था, बचपन में मेरी माँ ने मेरी नाक में छेद करवाया था, मैं वहां पे बहुत सुंदर मोती पहना करता था। That very hole is still there, and you can use it to set the pearl you decide to give to me. तो उसके बाद फिर वो कह रहे हैं, गोपाल जी कह रहे हैं कि वो जो छेद है वह अभी तक है और तुम जो मेरे को मोती देना चाहती हो वो तुम वहां पे मेरे को पहना सकते हो। After dreaming this, the queen explained to her husband, the king. तो फिर ये सपना देखने के बाद रानी ने अपने राजा पति को ये बात बताई। Both the king and the queen went to the temple with the pearl. तो उसके बाद फिर राजा रानी दोनों भगवान के मंदिर में गए उस मोती को लेके। Seeing the hole in the nose of the deity, they set the pearl there and being very pleased, had a great festival. उसके बाद फिर जब वे मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने भगवान की नाक में छेद देखा और फिर उस मोती को उस छेद में डाल के बहुत बड़ा उत्सव मनाया। Since then, Gopal has been situated in the city of Katak and has been known ever since as Sakshi Gopal. और उसके बाद फिर तब से ही गोपाल जी का विग्रह जो है वो कटक में है और तब से ये साक्षी गोपाल के नाम से जाने जाते हैं। That's the end of our story. अब ये कथा का अंत है। Now, that's the end of our stories about deities. Now there's an loving exchange between Krishna's devotee and an ordinary person. तो अब ये जो था ये विग्रह और भक्तों के बीच में था, जो था अब हम पढ़ेंगे भगवान में और साधारण लोगों के बीच में आदान प्रदान। So this story comes from Shrutakirti. It's Srila Prabhupada and the air stewardess. Srila Prabhupada and the air stewardess, the air hostess. एयर होस्टेस, राइट, ओके। सो ये श्रुतकीर्ति प्रभु जी ने ये कहानी बताई है जो कि प्रभुपाद और एक एयर होस्टेस के बीच की है। Okay, February 19th, 1975, Venezuela Airlines. Which airlines? Where? Venezuela, it's a country. So February 1975 में प्रभुपाद एक बार ट्रैवल कर रहे थे वेनिस, in Venice country, right? No, Venezuela. Venezuela, right, Venezuela. Yes, okay, Venezuela Airlines, it's in the air. It's on the airplane we're having this story. ये जो कहानी है ये एरोप्लेन में हुई है। So Shrutakirti writes, this is in one of his diaries, Srila Prabhupada influenced everyone he was with. तो श्रुतकीर्ति प्रभु अपनी एक किताब में लिखते हैं कि प्रभुपाद जो है अपने आसपास के हर चीज को प्रभावित किया करते थे। Traveling with him was an enlightening experience. और उनके साथ ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा अनुभव रहता था। It was ecstatic to see how he lifted everyone's spirits to the transcendental realm. तो फिर ये देखने से बहुत खुशी मिलती थी कि वो किस तरीके से सब में भक्ति के लिए उत्साह भर देते थे। But being with him in planes and airports, I offered a different opportunity. तो उनके साथ ट्रैवल करना एरोप्लेन में और हवाई अड्डे पे उनके साथ होना एक अलग ही तरीके का अनुभव हुआ करता था। I was able to see how he changed the lives of those who knew nothing about him.
तो फिर मैं ये देख पाता था जब उनके साथ ट्रेवल करता था कि वो किस प्रकार से उन लोगों की भी जिंदगी परिवर्तन कर देते थे जो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। He remarks, it must have been his effulgence. He must have been effulgence. Effulgence. So वो कहते हैं कि ये जो प्रभुपाद के अंदर का जो नूर था, जो उनके अंदर एक शक्ति थी, ये उसी चीज का असर था। Once a stewardess passed by him and said, "This man looks very wonderful." तो उसके बाद फिर एक एयर होस्टेस एक बार एरोप्लेन में आई प्रभुपाद के पास और कहने लगी कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अद्भुत लगता है। Others would ask what they could do for him. अदर्स Other stewardesses on other flights. सो अब बाकी लोग पूछने लगे कि हम प्रभुपाद से पूछने लगे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। One incident on Venezuela Airlines stands alone because it's so unique. तो ये अक्सर होता रहता था, लेकिन वेनेजुएला में जब प्रभुपाद ट्रेवल कर रहे थे उन एयरलाइंस में, तो ये बहुत अलग है, ये जो पास टाइम है प्रभुपाद के, इसीलिए इसको इतनी चर्चा करी जाती है। Srila Prabhupada, Paramahamsa Swami, Nitai Das, and myself were traveling from Mexico City to Caracas. तो शुद्ध कीर्ति प्रभु लिखते हैं कि प्रभुपाद, परमहंस प्रभु, निताई प्रभु, राइट, हाँ, एंड और शुद्ध कीर्ति प्रभु मेक्सिको से, वेयर वर दे ट्रैवलिंग फ्रॉम मेक्सिको टू Caracas. कराकस, वो मेक्सिको से कराकस की तरफ जा रहे थे। I hadn't prepared any prasadam for the flight, but just before we boarded the plane, an Indian lady who was a Vaishnava handed me a bag filled with puffed rice that she had made for the trip. तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कह रहे कि मैंने फ्लाइट में ट्रेवल करने के लिए कुछ भी प्रसादम प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन जब हम एरोप्लेन में घुसने, एयरपोर्ट में घुसने लगे, तो उससे पहले एक भारतीय नारी ने मुझे कुछ मुरमुरे दे दिए, जो कि उसने अपने, वो जो कि वैष्णव थी, जो कि उसने अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार करे थे। So just after takeoff, Prabhupada said, "All right, let's take prasadam." तो फिर जैसे ही हवाई जहाज चलने लगा, तो प्रभुपाद ने कहा चलो अब प्रसाद पाते हैं। Shruta Kirti asked, "Do you want what's being served on the plane?" तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ने प्रभुपाद से पूछा कि आपको क्या चाहिए, जो ये हवाई जहाज वाले दे रहे हैं वो चाहिए। Prabhupada replied, "No, no, we have our prasadam, that's all right." तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, हमारे पास अपना प्रसाद है, वही ठीक है। I didn't ask for a plate. I simply put the tray down, unwrapped the aluminium foil, and placed the puffed rice before my spiritual master. तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कह रहे कि मैंने कोई प्लेट वगैरह नहीं ली, सिर्फ जो सीट के सामने जो एक ट्रे होती है उसको उन्होंने नीचे किया, और एक फॉइल के अंदर जो मुरमुरा था वो बंद था उसके अंदर, तो वो फॉइल खोल दिया और उन्होंने प्रभुपाद के आगे रख दिया। He immediately started to eat. और फिर उसके बाद प्रभुपाद ने उसको खाना शुरू किया। Although it was only a small amount, he ate only half. तो उस बेशक वो थोड़ा सा ही था मुरमुरा, लेकिन प्रभुपाद ने उसमें से भी आधा ही खाया। Without even looking at me, he said, all right, now you can take." और फिर प्रभुपाद ने बिना शुद्ध कीर्ति प्रभु की तरफ देखे हुए बोला ठीक है, अब तुम इसको उठा सकते हो। So Sri Kirti remarks, this is just showing how much Srila Prabhupada always took care of those who were traveling with him. तो ये चीज ये दिखाती है कि प्रभुपाद उन लोगों का भी कितना ध्यान रखते थे जो उनके साथ ट्रेवल कर रहे होते थे। So Prabhupada was sitting by the window, as he always does. और फिर प्रभुपाद खिड़की की तरफ बैठे थे, जिस तरह से प्रभुपाद हमेशा बैठा करते थे। I always sat in the middle next to Prabhupada unless the GBC member pushed me out. तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कह रहे कि मैं हमेशा बीच में बैठता था प्रभुपाद के बिल्कुल साइड में, जब तक कोई मेरे को जीबीसी वाला धक्का मार के निकाल नहीं देता था। Paramahamsa sat in the aisle seat. और परमहंस प्रभु हैं जो कोने की सीट पे बैठे थे। I took the puffed rice from His Divine Grace and split the foil down the middle, keeping half for myself and giving the rest to Paramahamsa Swami. ओके, तो फिर शुद्ध कीर्ति प्रभु कह रहे हैं कि फिर मैंने प्रभुपाद के वहां से उस फॉइल को उठाया और फिर मैंने अपने लिए आधा रख के बाकी परमहंस स्वामी जी को दे दिया था। We were happily eating Srila Prabhupada's remnants when a young stewardess who was walking down the aisle looked at us. तो फिर शुद्ध कीर्ति प्रभु कह रहे हैं हम बहुत खुशी खुशी प्रभुपाद का बचा हुआ उच्छिष्ट पा रहे थे, कि एक सामने से एक जवान एयर होस्टेस आई। And she spontaneously reached past Paramahamsa and placed her hand into my Mahaprasadam. तो फिर उसके बाद उस एयर होस्टेस ने परमहंस स्वामी के सामने अपना हाथ फैलाया और महाप्रसाद मांगा। Grabbing a fistful, she tossed it in her mouth.
तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने एयर होस्टेस ने उसको प्रसाद को उठाया और अपनी मुट्ठी में भरा और अपने मुंह में डाल लिया। She said, "Oh, this is very good. What is it?" तो वो एयर होस्टेस, अरे ये तो बहुत स्वाद है, ये क्या है? And Shrutakirti was trying to keep calm, and he said, "It's puffed rice. It's made from rice." तो शुतुकीर्ति प्रभु जी शांत रहने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने बोला कि ये मुरमुरा है, पफ पफ राइस है। Srila Prabhupada looked at her with a broad smile. और फिर प्रभुपाद ने उस एयर होस्टेस की तरफ बहुत बड़ी सी स्माइल देते हुए देखा। "Ah, this is very good," she said again. तो फिर उसके बाद फिर प्रभुपाद ने जब उनकी तरफ स्माइल किया तो कहने लगी हाँ ये बहुत अच्छा है, दोबारा उन्होंने बोला। Shrutakirti was still a bit shocked about what she'd done, but he said, "I'm glad you like it." तो शुतुकीर्ति प्रभु हैरान हो रहे थे कि ये क्या किया है इसने, लेकिन फिर भी वह कह रहे थे कि अच्छी बात है कि आपको अच्छा लगा। She inquired, are you having anything else to eat?" तो फिर वो एयर होस्टेस पूछ रही कि आपके पास कुछ और भी है खाने के लिए? So Shrutakirti explained, "Well, we're vegetarians, so unless there's some fruit, we can't have anything." तो फिर श्रुति जी ने कहा नहीं हम लोग वेजिटेरियंस हैं तो हम लोग फ्रूट्स के अलावा कुछ भी नहीं खा सकते। She said, I'll go up to first class and get you a basket of fruit." कैन यू प्लीज रिपीट? She said, "I will go up to the first class cabin and get you a basket of fruit." ओके, तो फिर वो एयर होस्टेस बोलने लगी ठीक है मैं फर्स्ट क्लास वाले जहाँ पे बैठे मैं वहां पे जाऊंगी और वहां से आपके लिए फलों की एक टोकरी लेके आऊंगी। In a moment, she returned with fruit and knives and again asked if she could get us anything else. और फिर उसके बाद फिर वो फटाफट गई और फलों की टोकरी ले आई और चाकू ले आई और फिर पूछा कि आपको कुछ और चाहिए? So Shrutakirti looked at Prabhupada and said, "Prabhupada, would you like some milk?" तो फिर शुतुकीर्ति प्रभु ने प्रभुपाद की तरफ देखा और पूछा कि प्रभुपाद क्या आप कुछ दूध लेना पसंद करेंगे? He said, "Yes, hot milk." तो प्रभुपाद ने कहा हाँ ठीक है, गर्म दूध लेना पसंद करूंगा मैं। So he told the stewardess, "Okay, he will have hot milk and we can have some hot milk as well." तो शुतुकीर्ति प्रभु ने एयर होस्टेस को बोला कि वो कुछ गर्म दूध लेना चाहेंगे और हम भी गर्म दूध ले लेंगे। So she went quickly to the first class cabin and came back with hot milk. और उसके बाद फिर वो फटाफट से वापस गई और फिर गर्म दूध के साथ वापस लौट आई। Now, Shrutakirti remarks, Srila Prabhupada lectures many times about the super soul residing in the heart of every living entity. तो शुतुकीर्ति प्रभु कहते हैं कि प्रभुपाद अपने बहुत सारे लेक्चर्स में बहुत बार अपने हृदय में बैठे परमात्मा के बारे में वर्णन करते हैं। But I'd never before experienced his presence like I did that day. और उसे शुतुकीर्ति प्रभु कह रहे हैं कि मैंने परमात्मा की उपस्थिति को कभी इस प्रकार से महसूस नहीं किया था जिस प्रकार मैंने उस दिन किया। I became convinced that only the super soul in the heart of the stewardess would have inspired her to act in such an unprofessional manner. तो फिर शुतुकीर्ति प्रभु कह रहे हैं कि ये जो उस एयर होस्टेस के हृदय में बैठे परमात्मा है, उन्होंने ही उसको आदेश दिया होगा कि इस तरीके से इतने अनप्रोफेशनल तरीके से व्यवहार करे। He says, the devotees would always come to him begging for Prabhupada's remnants, even offering money, which he never took. तो शुतुकीर्ति प्रभु कह रहे हैं कि बहुत सारे भक्त प्रभुपाद के पास आते थे उनका उच्चिष्ट पाने के लिए और इस चीज के वो प्रभुपाद को पैसे भी देते थे, पर प्रभुपाद ने कभी उनसे पैसे नहीं दिए। But here, this flight attendant boldly going where no one had ever gone before and received the mercy of Krishna as a pure devotee. तो लेकिन ये जो एयर होस्टेस थी बहुत ही खुले तरीके से आई और इन्होंने प्रभुपाद के उच्चिष्ट को पाया और भगवान की और उनके शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त करी। So there's a part 2 to this story. तो अब इस कथा का दूसरा भाग है। A few years later, again in South America, Shrutakirti told the above story to an audience. तो उसके बाद फिर कुछ सालों बाद शुतुकीर्ति प्रभु साउथ अमेरिका में थे और उन्होंने ये कहानी सबको सुनाई। A devotee came up to Shrutakirti afterwards and said he would like to share an amazing story with him. उसके बाद फिर जब शुतुकीर्ति प्रभु कथा कर रहे थे तो उसके बाद एक भक्त शुतुकीर्ति प्रभु के पास आए और उन्होंने बोला कि मेरे को आपको एक बात बतानी है। This devotee was out in some very remote village, going door to door selling books. तो उस भक्त ने कहा कि मैं बहुत अलग-अलग गांव में जाता था और किताबों का वितरण करता था।
When he knocked on one door, a lady opened the door wearing tilak. तो उसके बाद फिर जब वो ऐसे ही पुस्तक वितरण करते करते एक घर में पहुंचे तो एक औरत ने दरवाजा खोला जो कि बहुत समझदार लग रही थी. She invited the devotee in, and her house was like a little temple. और उसके बाद फिर उन्होंने उस भक्त को अंदर बुलाया और उस स्त्री का जो घर था वह एक छोटे से मंदिर के समान ही लग रहा था. She had an altar with deities, और उनके पास जो एक ऑल्टर था उनका उसके अंदर उनके मंदिर में अर्च विग्रह थे pictures on the walls, और दीवारों पे चित्र थे and all of Prabhupada's books in Portuguese on her bookshelf. और सारी प्रभुपाद की किताबें थी पोर्टुगीज लैंग्वेज में उनके बुक शेल्फ के ऊपर. The devotee asked her how she became a devotee. तो फिर उस भक्त ने उन माता जी से पूछा कि आप किस प्रकार से भक्त बने थे. She said she used to be an airline hostess several years ago, and she met the author of these books. तो वो बोलने लगी कि मैं कुछ साल पहले एक एयर होस्टेस थी और ये किताबें जिसकी हैं मैं उसके ऑथर से मिली हुई हूँ. He was so saintly and gentle and kind that she looked up who he was and what he did from his boarding pass name. तो फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसे वो इतने अच्छे थे और इतने अच्छे स्वभाव के थे कि मैंने उनके बोर्डिंग पास में देखा कि वह कौन है. Then she got some of his books and began to read. और उसके बाद फिर उन्होंने प्रभुपाद की कुछ किताबें ली और उनको पढ़ना शुरू किया. They said to chant, so she chanted. तो फिर उसके बाद उन किताबों में लिखा था कि जप करो तो उन्होंने जप करना शुरू कर दिया. And she offered her food to Krishna. और फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो खाना है उसको कृष्ण को भोग लगाना शुरू कर दिया. She did it all and became a devotee, just from some small contact with the prasadam of a pure devotee. तो उसके बाद उन्होंने ये सब किया और वे शुद्ध भक्त बन गई सिर्फ उसी चीज से जो उन्होंने प्रभुपाद का उच्चिष्ट मतलब एक भगवान के शुद्ध भक्त का उच्चिष्ट पाया था. Okay. Here's another story. I'll have to abbreviate these stories a little bit, otherwise we'll never get onto the Acharya's commentaries. We can continue like this. Yeah, okay. This other story is also very interesting. And I don't know who's writing this story. Let me find the end of it. The story is written by Sitala Devi Dasi, who's one Prabhupada disciple. She's the one who writes the books on the Acharyas, right? Sitala, I think. In the early 80s, I spent time in Israel helping a small group of devotees open a prasadam restaurant. तो शीतला माता जी प्रभुपाद की एक डिसाइपल हैं वो लिखती हैं कि अर्ली 80s में मतलब जब 80 का सन चल रहा था तो वह इजराइल में थी और व्हाट वाज देयर इन इजराइल she met a she was helping a small group of devotees open a prasadam restaurant. तो फिर वो माता जी कह रही है कि मैं कुछ भक्तों के साथ मिलके उनको एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलने में हेल्प कर रही थी जहाँ पे प्रसादम रख सके. But because of the political situation, they had to be undercover. So they called it the Maharaj, pretending that it was just an ordinary Indian vegetarian eating place. तो फिर उसके बाद क्योंकि वहां पे राजनीतिक स्थितियां इस प्रकार थी कि वह उन्हें ये सारे कार्य छुप छुप के करने पड़ते थे तो उन्होंने इस प्रकार से अपना ये जो रेस्टोरेंट इस प्रकार से खोला जैसे कि एक नॉर्मल वेजिटेरियन इंडियन फूड में जहाँ पे भारतीय खाना मिलता है जहाँ पे इस प्रकार का एक रेस्टोरेंट खोला है. So the devotees all lived together in a small apartment above the restaurant. तो उसके बाद फिर वो सारे भक्त जिन्होंने मिलके वो रेस्टोरेंट खोला था वो उस रेस्टोरेंट के ऊपर वाले ही घर में रहा करते थे. And each morning, each of them would dress in their ordinary clothes to become pot washer, manager, and cook, etc. तो उसके बाद फिर सुबह सुबह वो जो भक्त थे वो अपने साधारण कपड़ों में ही रहते थे जिस प्रकार वो कोई वेटर लगता था कोई मैनेजर लगता था और कोई बर्तन धोने वाला लगता था. She says, surely it looked weird for all of us living together in a small apartment, but we tried to appear as normal as possible. तो माता जी कह रही है कि बहुत अजीब सा था हम सबके लिए एक ही घर के अंदर रहना लेकिन हमने बहुत कोशिश करी कि हम जितने नॉर्मल लग सके हम उतने ही नॉर्मल लगे. So part of the deal acquiring the restaurant was that we had to continue to employ 2 head waiters that were working there previously.
ओके तो वहाँ पे कहते हैं वहाँ रेस्टोरेंट खोलने की एक शर्त थी कि हम उन लोगों को भी काम पे नौकरी पे रखें जो कि पहले से ही उस जगह पे वेटर थे। This was extremely awkward because we had to pretend to hide all day the fact that we were devotees. तो माता जी कह रहे कि ये बहुत अजीब था क्योंकि हमें पूरा दिन ऐसे अभक्तों की तरह ही रहना पड़ता था। It didn't take long before it dawned on the waiters that there was something highly unusual about us. तो फिर उन वेटर्स के लिए ये चीज देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि उनको हमें कुछ अजीब सा अलग सा दिखता था। They were constantly trying to figure out what our vegetarian mafia was all about. तो वो इसी यही प्रयास करते रहते थे वहाँ के जो लोकल वेटर थे कि ये जानने के लिए कि हमारा ये वेजिटेरियन मफिन क्या ये एग्जैक्टली। So these waiters, and she thinks their names sounded like Yoshi and Moshi, loved prasadam. तो उसके बाद फिर वहाँ पे वेटर्स थे, 2 वेटर्स थे, एक योशी, एक मोशी, वो उनको वो प्रसादम बहुत पसंद आता था। Moshi was especially addicted. तो जो मोशी था वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था। Every night I made him a gigantic plate and he would happily eat it all and ask for more. तो उसका जो मोशी था उसको माता जी रोज़ रात को एक बहुत बड़ी प्लेट बना के देती थी खाने के लिए, वह सब खा जाता था और फिर दोबारा और माँगा करता था। One night, however, when I asked, "So what do you want tonight, Moshi?" He replied in a harsh tone, "I don't want any of that stuff." तो फिर उसके बाद एक रात मोशी से माता जी ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए मोशी, बताओ तुम आज क्या खाओगे? तो उसने बहुत कठोर तरीके से जवाब दिया कि नहीं, मुझे आज इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। I was shocked. "Moshi, you don't want to eat?" तो फिर उसके बाद माता जी हैरान हुए कि मोशी क्या तुम खाना नहीं खाना चाहते? He looked at me very suspiciously and said, "What's in that food? What do you put in it? What do you do to it?" तो मोशी जो है बहुत शक भरी निगाहों से माता जी को देखने लगा और पूछा कि क्या है उस खाने में, तुम क्या मिलाती हो उस खाने के अंदर? I laughed and said, "Come on, Moshi, you see what we put in it. Spices, hing." तो फिर माता जी ने बोला कैसी बातें कर रहे हो तुम मोशी, तुम देखते तो हो हम क्या-क्या डालते हैं उस खाने में, सिर्फ मसाले ही तो डालते हैं। Moshi said, "No, no, please, come on, please tell me, what do you do to it? It's not normal food. It does something to you." तो मोशी कहने लगा कि नहीं प्लीज मुझे बताओ तुम इसके अंदर क्या डालती हो क्योंकि ये नॉर्मल खाना नहीं है, मुझे कुछ करता है। I मुझ was laughing by that stage. It does something. What do you think it does? Moshi, have you been drinking? तो माता जी कहने लगी कि क्या क्या करता है तुम्हें? माता जी को भी हंसी आ रही थी और माता जी ने पूछा क्या तुम शराब पी रहे हो आजकल? So she said, "Look, if you don't want to eat, that's fine. I'll take it away." And I started to pull the plate away. तो माता जी कहने लगी कि ठीक है तुम्हें नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मत खाओ। फिर माता जी वो प्लेट को उठा के चलने लगी। He said, "No, no, 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 no. I mean, I want it. I love it. But, तो मोशी कहने लगा नहीं इसे मत लेके जाओ, मेरे को पसंद है ये, मुझे अच्छा लगता है लेकिन। but what?" I asked. तो फिर माता जी ने बोला कि लेकिन क्या क्या बोलना चाहते हो तुम? "Well, it's my wife," he said. "She hates it." तो मोशी बोलने लगी कि मेरी जो पत्नी है वो इस चीज से नफरत करती है। "Your wife? What does she have to do with it?" तो माता जी ने बोला कि तुम्हारी बीवी का इस चीज से क्या लेना देना? So he was a little embarrassed. He says, "Well, you know, she says I'm not as passionate as I used to be. She really doesn't like it." तो उसकी पत्नी कहने लगी कि नहीं, उसकी पत्नी को यह दिक्कत थी कि वो कहने लगी कि नहीं तुम उस प्रकार से नहीं रहे जिस प्रकार तुम पहले थे। She made me promise I wouldn't eat it anymore. तो फिर उन्होंने मेरी पत्नी ने मुझसे वादा लिया कि मैं इसको दोबारा नहीं खाऊंगा। At that stage, I couldn't help myself. I burst out laughing. तो उसके बाद फिर माता जी कहने लगी कि फिर इसके बाद मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई, मुझे बहुत जोर जोर से हंसी आने लगी। "Oh, that is serious. You better not eat anymore then." तो माता जी ने कहा नहीं ये तो बहुत गंभीर बात है, तो अब तुम्हें इसे नहीं खाना चाहिए। He saw me pulling the plate away. His face flushed red and he erupted, "Oh, I don't care. Give me that plate. I love that stuff. I don't care what it does to me." तो मोशी जो है वो उसको वापस मांगने लगी कि नहीं मत लेके जाओ, मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे दे दो, मैं ये खाना चाहता हूँ। So he happily sat down and ate. तो फिर मोशी वहां पे आराम से बैठ के खाना खाने लगा। So she was mentioning how this transcendental plate of goodness weapon was seeping into his soul, stealing away his mundane passion.
तो फिर माता जी कह रहे हैं कि किस तरीके से ये सतोगुण का जो खाना है एक एक व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर का जो रजोगुण है, बिना बात का अहंकार है, उसको खत्म कर देता है। And such incidents were encouraging to them because it was very difficult distributing prasadam in such an environment. हाँ, तो माता जी कहने लगे कि बहुत उनके लिए मोटिवेटिंग था, क्योंकि बहुत मुश्किल था ऐसे मतलब माहौल में खाना बांटना और लोगों को कन्विंस करना। Okay, there's one more story. तो एक कथा और आती है। Where have I gone? I just flicked in the wrong direction. It's just gone away. Let me find it. Oh, there we are. Here we are. Okay. So this is a story about the book distributions. तो ये पुस्तक वितरण के बारे में एक कथा है। So they would travel around in vans. They would travel in vans. Yeah, and they would sleep in the van. ओके, तो फिर जो पुस्तक वितरण करते थे जो भक्त, वह वैन्स में ट्रेवल करते थे और उसी के अंदर सोया करते थे। So one time we were parked in Days Inn parking lot for the night, and all 5 of us brahmacharis were fast asleep when we heard the megaphone. Who is narrating it, Mataji? Who's narrating it? No, the source is just from shalagram.net. This Okay. don't know. तो एक बार 5 ब्रह्मचारी थे जो कि पार्किंग लॉट में अपनी वैन को पार्क करके सो रहे थे। So they heard the police megaphone. तो उनको फिर पुलिस की आवाज आई, फोन की आवाज। All right in there, come out slowly with your hands raised. तो पुलिस की उनको आवाज आई कि चलो चलो अब यहाँ से बाहर निकलो और अपने हाथ ऊपर करो। I looked at the window, surprised to see the van surrounded by 10 police cars and more than a dozen officers with their guns drawn. तो फिर भक्त बता रहे हैं कि जब मैं उठा और मैंने देखा कि ये क्या है, शीशे से मैंने देखा तो 10 पुलिस की गाड़ियां और लगभग 12-15 पुलिस के जो लोग थे वो थे वहां पे। So we came out of the van, squinting from the bright lights burning our eyes. तो फिर वो डिवोटी बता रहे हैं कि ठीक है, हम उसके बाद फिर वैन से बाहर आए और बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही थी हमारी आंखों पे जो पुलिस की गाड़ियों ने जला रखी थी। The officers began to frisk us, even though we were dressed only in gamchas. Started to arrest us. Frisk, search. ओके, तो जो वहां पे पुलिस वाले थे वो उन भक्तों की तलाशी लेने लगे और वो सारे भक्तों ने सिर्फ गमछा डाल रखा था। The officer in charge said, "What are you doing here?" तो फिर पुलिस वाले पूछने लगे कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? I explained, we are distributing love of God in the form of books. तो फिर प्रभु जी ने बोला कि हम भगवान का जो प्रेम है इन पुस्तकों के रूप में बांट रहे हैं। He said, "Prove it." तो पुलिस ऑफिसर ने बोला कि ठीक है, इस चीज को साबित करके दिखाओ। I opened the van doors, thinking that this was perhaps a dream. तो फिर उन प्रभु जी ने वैन का दरवाजा खोला ये सोचते हुए कि ये मात्र एक सपना ही होगा। I reached into one of the boxes, pulled out a Bhagavad Gita, and handed it to the officer in charge. और उसके बाद फिर प्रभु जी ने गाड़ी खोली और एक पेटी में से एक भगवत गीता निकाली और उस पुलिस वाले को दे दी। He looked intently at the book, then at me, then at the book again, then at the book again. ओके, और उसके बाद फिर उन पुलिस वाले ने पहले प्रभु जी को देखा और फिर बुक को देखने लगा। And finally, he broke the silence और फिर उसके बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी by declaring all glories to Srila Prabhupada. और फिर उसके बाद ये बोला, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। I was very surprised. तो फिर प्रभु जी कह रहे कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। And so were all his gun-carrying subordinates. और फिर उसके सारे जो नीचे छोटे पुलिस ऑफिसर थे वो सब भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। At this point, I was convinced it was all a dream. उसके बाद फिर प्रभु जी को लगा कि अच्छा, मुझे अब सच में लग रहा था कि ये सब एक सपना ही है। The officer in charge proudly exclaimed, "I used to go to the University of Florida." तो फिर उसके बाद वो जो पुलिस वाला है वो बहुत गर्व से बोलने लगा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में जाया करता था।
and regularly ate the free Krishna lunch. और उसके बाद फिर मैं जब वहां जाया करता था तो मैं जो कृष्ण प्रसाद मिलता था फ्री में मैं उसको खाया करता था. You people practically put me through college. और तुमने मुझे मेरे कॉलेज के दिनों में वापस डाल दिया. I even stayed 2 days at the temple. और मैं वहां पे 2 दिन एक बार एक उस मंदिर में मैं 2 बार रुका भी था. 2 दिन के लिए रुका भी था एक बार. Turning to his associates, he said, "These are great books and you should all buy one." और उसके बाद फिर अपने सारे साथ के पुलिस ऑफिसर्स को बोलने लगा कि ये बहुत महान किताब है, तुम्हें भी इस किताब को जरूर लेना चाहिए. He's the boss. So on his order, they all began reaching for their wallets. तो फिर उसके बाद क्योंकि वो उनके बॉस थे तो सबने उनकी बात मानी और सब अपने अपने पर्स निकालने लगे. He says, "I think of 20 police officers, I think 90% of them bought books." और उसके बाद वो 20 पुलिस ऑफिसर थे लगभग और उसमें से 90% लोगों ने वो किताबें खरीद ली. They gave almost $200. दे गेव Almost $200. और उन सब ने मिलके लगभग $200 के आसपास पैसे दिए. So and the police officer, who's now their friend, apologized for the abrupt entry, telling us that early there was a gun store. Earlier that night, a gun store had been robbed. सो वो पुलिस वाला जब उनका दोस्त बन चुका था वो उनसे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि पहले यहाँ पे कुछ ऐसे चोर वगैरह थे इस वजह से हमने तुम्हें इस प्रकार से निकाला. And the vehicle that was used was described exactly like theirs. Can you please repeat? The description of the vehicle that was used in that robbery exactly matched our van. तो वो चोर जिस प्रकार की गाड़ी यूज करते थे, जो वाहन यूज करते थे, वो उसी प्रकार का था जिस प्रकार का आप लोगों की वैन है. And he said after that experience, it was very difficult to go back to sleep. और फिर प्रभु जी कहने लगे कि ये सब होने के बाद सोना बहुत मुश्किल हो गया था. And to end this story on Prasadam, Srimati quotes from Hari Bhakti Vilas. अब एक श्रीमती माता जी एक हरि भक्ति विलास की कथा बताती हैं. From Brahma Puran, the words of Krishna to Lord Brahma. तो ब्रह्म पुराण से भगवान कृष्ण ने जो ब्रह्मा जी को बोला. Naivedyam purato nyastam drishtveva svikritam maya bhaktasya rasanagrena rasam asnami padmaja. I look upon the foodstuffs offered in front of me, and in that way I accept them. तो भगवान कह रहे हैं कि जो खाना मुझे भोग लगता है मैं उसकी तरफ देखता हूँ और इस प्रकार से मैं उसको ग्रहण करता हूँ. O Brahma, I taste those preparations through the tongues of my devotees. और फिर वो भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि ये सारा जो भोग बनता है मैं अपने भक्तों की जीवा से इसका स्वाद लेता हूँ. Okay, that's the finish of that. Okay, so there's one chart which I didn't get translated. I'll just describe it briefly. If we follow the culture of lust, अगर हम काम के कल्चर को फॉलो करते हैं, this is impersonalist and this is me-centered. ये मायावादी है और बहुत ज्यादा अपने पे केंद्रित रहता है. It's full of envy, और ये जलन से भरा हुआ है exploitation, और एक्सप्लॉयटेशन की हानि पहुंचाने वाला है. a sense of alienation and fear. और ये बहुत घबराहट की स्थिति बनाता है. Where everyone's isolated and individuals struggle for existence. और हर कोई अपने में अकेला है क्योंकि वह अपने जीने के लिए प्रयत्न कर रहा है. And it leads to being hard-hearted. और सब बहुत कठोर दिल के होते जा रहे हैं. And to death. और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है. If we follow the culture of love, लेकिन अगर हम प्रेम पूर्वक रहें, which is personalism and Krishna-centered, जो कि कृष्ण को केंद्रित करता है, and it's full of friendship instead of envy, और ये दोस्ती से भरा हुआ है ना कि जलन से, service instead of exploitation, और सेवा भाव से भरा हुआ है ना कि किसी को हानि पहुंचाने से, encouragement and security instead of alienation and fear. तो एक अच्छी सुरक्षित भावना देता है ना कि एक भयपूर्ण स्थिति बनाता है. We become an insulated group. We become an
insulated group. It means altogether we're insulated from the और फिर effects from outside. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अकेले नहीं रह जाते बल्कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं Instead of being isolated individual. और ना हम अकेले नहीं रह पाते अकेले नहीं रह जाते यदि हम ऐसा करते हैं तो And becomes open-hearted instead of hard-hearted. और कठोर दिल का बनने की जगह हम नर्म दिल के हो जाते हैं And leads to progressive spiritual life and not death. और फिर ये चीज जो है ये भक्ति में उन्नति करने के लिए मदद करती है ना कि मृत्यु की तरफ ले जाती है And she gives two questions. Which culture did Srila Prabhupada give us? तो उसके बाद फिर श्रीमती माता जी 2 प्रश्न लिख रही हैं आखिरी में विच कल्चर हमें प्रभुपाद ने कौन सा कल्चर दिया था And which culture am I living? और फिर मैं कौन से कल्चर में हूँ प्रभुपाद ने मुझे क्या दिया और मैं किस प्रकार से रह रहा हूँ The choice is mine. और ये जो चॉइस है ये मेरी ही है Okay, now we've got some Acharya's commentaries. अब आचार्यों की टीका है So as I said, this is mostly about Sangha, association. तो ये जो है ये आचार्यों की टीका है ये ज्यादातर संघ के ऊपर ही केंद्रित है Bhaktivinoda Thakur says, associating with ordinary people, jana sangha, is unfavorable for devotional service. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि साधारण लोगों का संग करना यानी जन संग करना हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है Therefore should be given up. और इसीलिए इसको त्याग देना चाहिए Those who are dedicated to loving devotional service have to associate with pure devotees to become rectified of this fault. जो कि प्रेम में भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए ताकि वह सही से भक्ति में उन्नति कर पाए Affection in the form of sadhu sangha fosters bhakti. और प्रेम साधु संग के रूप में साधुओं से प्रेम करना ही हमारी भक्ति में उन्नति करवाता है This is what is indicated in this 4th verse. और यही इस चौथे श्लोक में बताया गया है Now, who's doing this? Let me just check who wrote this. Okay, Bhaktisiddhanta Saraswati, he writes, Bhakta Jana Saha Priti Sangachaya E Abhakteya Priti Kare Bhagyavan Ye. Fortunate is he who engages in such loving exchanges with devotees and who does not develop such affection for non-devotees. तो भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि वह व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली है जो एक शुद्ध भक्त का संग कर पाता है और अभक्तों के संग से बचा रहता है Now, okay, so he goes on to say we should not establish a loving relationship with any of these non-devotees, Mayavadis, pious fruitive workers, or materialists. तो हम यहाँ पे भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं बनाने चाहिए जो कि मायावादी हो कर्मी हो या भौतिकतावादी हो Srila Narottam Das Thakur says, do not talk about your personal devotional practices here and there. तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अपनी भक्ति के कार्यों के बारे में इधर-उधर बातें करने की आवश्यकता नहीं है There is no necessity to hear their confidential discussions. और ना ही ऐसी कोई आवश्यकता है कि आप भक्तों की जो बातें हो रही हैं उन्हें सुनने की Because people who are opposed to Lord Hari are killers of the soul. People who are opposed to Lord Hari are killers of the soul. जो भगवान हरि के विपरीत चलते हैं वे अपनी आत्मा को मार देते हैं One must not eat anything touched by members of these groups. और एक भक्त को ऐसा भी कोई वस्तु नहीं खानी चाहिए जो इन लोगों के द्वारा हाथ लगाई गई हो If one eats such food, one accepts something of their tendency to enjoy separately from Krishna. तो यदि कोई ऐसा खाना खाता है ऐसा भोजन लेता है तो वह जो इच्छाएं हैं उनकी जो भगवान के बिना अपने आप को एंजॉय खुशी मनाना चाहते हैं वह चीज भी हमारे अंदर आ जाती है Vishayera ana kaile malina haya mana malina mana haile nahi krishnera smarana. When one eats food offered by a materialistic man, one's mind becomes contaminated
और यदि कोई भक्त ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति के हाथ से दिया हुआ खाना खाता है तो उसका जो मन है वह दूषित हो जाता है. And when the mind is contaminated, one is unable to think of Krishna properly. और जब मन दूषित हो जाता है तो व्यक्ति कृष्ण के बारे में अच्छे से नहीं सोच पाता. Chaitanya Charitamrita, Antya Leela, 6th chapter, 278th verse. ये चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 6th चैप्टर के which was the verse 278. and 278th verse. One must not feed members of these three groups of materialists. One must not Feed, give food to. Okay. तो एक व्यक्ति को ऐसे 3 लोगों को खाना नहीं देना चाहिए जो भौतिकतावादी होते हैं. From either of these activities, giving food or accepting and eating food, mutual affection increases. और यदि ऐसा करते हैं, खाने का आदान प्रदान करते हैं, तो उसमें क्या है कि प्रेम विकसित होने लगता है. The living entity makes advancement in any particular field by increasing affection for those who are of a similar intentions and who are affectionate towards him. तो एक व्यक्ति को किसी भी मतलब फील्ड में अपनी अगर गति चाहिए तो वह ऐसे लोगों का ही संग करता है जो उसको उस चीज में प्रोत्साहित करें और उससे उनका प्रेम हो. Therefore, engaging in any of those following exchanges with people of dissimilar groups should be given up. तो इस प्रकार से जो 6 प्रकार की चीजें लिखी गई हैं इस श्लोक के अंदर, ये ऐसे व्यक्तियों से नहीं करनी चाहिए जिनका इंटरेस्ट हमारी तरह नहीं हो. Giving and taking, लेना और देना, inquiring confidentially and listening to confidential matters, उनसे प्रश्न करना और उनके प्रश्न सुनना, eating or offering food. खाना देना या लेना. Now, what we've got for the last 15 minutes is some insights from Bhaktivinoda Thakur's Bhakti Loka. तो अब भक्ति विनोद ठाकुर के भक्ति लोका से चर्चा होगी. बट माता जी, I have one question. Please ask. So it stated that we should not give food to materialists, and on other way around, it's like we should be distributing prasadam. So how do we go about it? Well, we had that. Oh, you didn't do that. Okay. We have that when we study Harinam Chintamani. The 9th offense to the holy name, we do not give Krishna consciousness to the non-devotees, those who are not faithful. So what Bhaktivinoda Thakur explains in the remedy to that the remedy for not giving, teaching the non-devotees, the unfaithful, is to go out on Harinam Sankirtan. And by chanting of the holy name, they will start to develop some faith. So this is exactly in line with the fact that Prabhupada was always saying, don't distribute food without the chanting of the holy name, right? The holy name is going to help to instill faith in those groups of people. So we shouldn't be just distributing food. We should be including the chanting of the holy name. Yes, right. And in that way, we're giving Krishna conscious to them. We're not exchanging in love. Okay, right. And there are some more explanations in this one, Bhaktivinoda Thakur also. Okay. So in the beginning, okay, many people have doubts about this topic. तो बहुत लोगों को इस विषय में डाउट होते हैं. Doubts may be there because if just by coming close to materialistic or a material object is considering associating with them, there is no way to give up this association. Can you please repeat? Doubts may be there because if coming close to a materialist or material object is considered associating with them, then there is no way to give up this association. तो यहाँ पे कुछ प्रश्न इस प्रकार आ सकते हैं कि भौतिकतावादी लोगों का संग करना, उनके आसपास रहना भी उनका संग करना ही होता है. तो किस प्रकार से इन लोगों के संग को त्यागा जाए? As long as the material body is there, how can one give up the proximity of these things? और जब तक ये हमारा भौतिक शरीर है तब तक हम इन चीजों को कैसे त्याग सकते हैं? How can a Vaishnav Grihastha give up his family members?
और किस प्रकार से एक वैष्णव गृहस्थ जो है वह अपने परिवार के लोगों को त्याग सकता है। Even a renunciate cannot give up the association of deceitful persons. और एक जो सन्यासी है वह भी इन लोगों का संग नहीं त्याग सकता। One will have to come across materialists in one life, whether one is grihasta or renunciate. और एक जो भक्त है उसको ऐसे भौतिकतावादी लोगों के संपर्क में तो आना ही पड़ेगा, चाहे वो गृहस्थ है या वो सन्यासी है। Therefore, the limit for giving up association of materialist is prescribed in this verse. Dedati pradigrinati guyam akyati prichati punkte bojate chaiva sad vidim priti lakshanam. तो फिर इन चीजों को किस प्रकार से उनका संग करना, किस प्रकार से नहीं करना, यह इस श्लोक में दिया गया है। Okay, one must accept proximity with both bad and good people as one passes his life. तो उसके बाद फिर बहुत हम पूरे जीवन में हमें अच्छे और बुरे लोग दोनों मिलते हैं, तो हमें उनको सोच समझ के संग करना चाहिए। Proximity must be there. Nevertheless, one should not engage in bad association. तो बातचीत तो जरूर होती ही है, लेकिन कभी भी वार्तालाप में उनके साथ नहीं उलझना चाहिए। Giving in charity, accepting charity, revealing one's mind, hearing another's mind, accepting food, giving food. तो जो कि है दान देना, दान लेना, खाना देना और खाना लेना, और दान, चैरिटी, फूड एंड व्हाट वाज Revealing one's mind, hearing अपना one अप, another's. अपना मन उनके सामने प्रकट करना और उनके मन की बात सुनना। If done with love, these are called sangha or association. यदि हम किसी व्यक्ति से ये सब चीजें प्रेम से करते हैं तो यह उसका संग करना कहलाता है। Giving some foodstuffs to a hungry person और किसी भूखे व्यक्ति को कुछ खाना देना and accepting charity from a pious man और किसी अच्छे व्यक्ति से दान लेना, is done out of duty, not out of love. और यह एक कार्य की तरह किया जाता है, ना कि प्रेम से किया जाता है। Even if they are materialists, this type of engagement is not considered association. और यदि यदि कोई व्यक्ति भौतिकतावादी भी है तो इस प्रकार का जो आदान प्रदान है यह उनका संग करना नहीं कहलाता। But if they are pure devotees, then such activities are performed out of love. लेकिन अगर वे शुद्ध भक्त हैं तो ये सारे कार्य जो है प्रेम से किए जाते हैं। When acts are performed out of love, then it is association. लेकिन जब भी कोई कार्य प्रेम से किया जाता है तो यह संग कहलाता है। Therefore, giving charity to pure devotion Vaishnavas and accepting items or wealth from them becomes satsanga. और किसी शुद्ध भक्त को दान देना और उनसे बदले में लेना ही सत्संग कहलाता है। And if we do the same things with the materialist out of love, it becomes asatsang. और यही चीजें अगर हम किसी भौतिकतावादी व्यक्ति के साथ करते हैं और प्रेम से करते हैं तो इसे असत्संग कहा गया है। When a materialist approaches you, whatever is required to be done should be done out of duty. तो यदि कोई भौतिकतावादी हमारे पास आता है और कुछ मदद मांगता है तो जो भी करा जाए वैसे एक फर्ज निभाने की तरह किया जाना चाहिए। And one should not speak confidentially with a materialist. और किसी भौतिकतावादी से बहुत बात नहीं करनी चाहिए। If there is love in confidential speaking, then it is association. और यदि आप उनसे कुछ बात करते हैं और प्रेम से बात करते हैं तो ये उनका संग करना कहलाता है। While meeting a materialistic friend, one should speak only what is extremely necessary. और जब कोई हम किसी अपने भौतिकतावादी मित्र से मिलते हैं तो सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो। But if that friend is a proper Vaishnava, one should accept his association by speaking to him with love. तो लेकिन यदि वह मित्र अगर शुद्ध भक्त है, शुद्ध वैष्णव है, तो उसके साथ प्रेम से बात करनी चाहिए और उसका संग करना चाहिए। This type of behavior with relatives and friends creates no hostility. तो इस प्रकार का जो व्यवहार है अपने रिश्तेदारों से और दोस्तों से, यह किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं बनाता। There is no association in ordinary talk. और ये बिल्कुल साधारण बातचीत करना संग में नहीं आता। One should behave with ordinary people as one externally behaves with a stranger when buying something in the market.
हमें भौतिकतावादी या साधारण लोगों से उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जैसे हम किसी अनजान व्यक्ति से बाजार में व्यवहार करते हैं. If one is obliged to feed hungry people, needy people, and teachers, he should do so as a host dutifully cares for his guest. यदि किसी की जिम्मेदारी है कि गरीबों को खाना खिलाना या किसी के लिए कुछ अच्छे कार्य करना समाज के लिए, तो उसे वैसे भी अपने एक फर्ज की तरह करने चाहिए. There is no need to exhibit love. इसमें प्रेम दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है. So that answers your question, doesn't it? Yes. Okay. So one should feed pure Vaishnavas with love and तो accept the remnants given by them with love. तो एक व्यक्ति को भक्तों का जो भक्तों को बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए और प्रसाद देना चाहिए और फिर उनका जो उच्छिष्ट है उसको पाना चाहिए. Okay. There is no hope of achieving devotion to Krishna until one gives up unholy association. कोई भी व्यक्ति कृष्ण को तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वह अपना असत्संग त्याग नहीं देता. So that means we follow these exchanges out of duty and we don't speak confidentially to any of them. ये इसमें ये है कि इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें हम अपने सिर्फ फर्ज की तरह करें और उनसे बहुत ज्यादा बातचीत में ना उलझें. Okay, that end. तो आज के लिए इतना ही है. Any questions or comments or reflections? किसी को कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी या कोई कुछ और बताना चाहते हैं कोई? Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. The stories were excellent, Mataji. They were wonderful. Earlier than this, I used to think that revealing one's mind only meant that we are discussing our problems or our very confidential subject matters with the devotees only. But when you told about those stories, how devotees reveal their mind to Krishna, that gave a whole new picture to me. I'm very thankful to you about this. Wonderful. Good. Thank you. Yeah. Thank you so much. Hare Krishna. Yeah, and like even in the purport, Srila Prabhupada says, a junior devotee inquires and a senior devotee explains. So it's not actually intended that we reveal all our problems to others. Mataji, I have one question. Yes. Suppose it said we should give in charity to devotees and accept the charity from devotees, right? So sometimes what happens is that giving charity becomes one-sided at a point, that you're just giving, giving, giving. Well, then if you're not doing it out of duty because they're needy, then you should stop it. Because otherwise that's putting them in a position of debt, which is not good for them, right? Right. That we heard that last week. If Prabhupada was explaining, if someone is just giving, 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 and there's no exchange, then it's not a loving exchange. Right. So although you may keep doing it, you may get resentful, but also they're accumulating debt, which is not good for them also. It's not a loving exchange. So out of duty also when it is done sometimes, but the other person is becoming greedy because you're doing it out of duty, but the other person is becoming greedy. Then what to do about it? Yeah. I mean, that has to be judged on a case-by-case basis, doesn't it? I mean, out of duty, Prabhupada also gives, Krishna gives the explanation for giving of charity in the Bhagavad Gita. How charity given with, let me find it, charity giving with some expectations is, let me find charity. Is in mode of passion. Yeah. It's in 16th chapter, I think, 16th or 17th. I think 17th chapter. Yeah, 17th chapter. New query. Charity. I'm just searching because it's easier than me trying to remember. It should be given to the right person, right time. Yes. In the right mood.
Yeah, there it is. So 1720 is charity given out of duty without expectation of return at the proper time and place to a worthy person is considered to be in the mode of goodness. So to a worthy person, in other words, Prabhupada writes in the purport, indiscriminate charity is not recommended in Vedic literature. So if you're giving, or in the sentence before that, charity to the poor is sometimes given out of compassion, but if a poor man is not worthy giving charity to, then there is no spiritual advancement. So in other words, if someone's being greedy, they don't get to be called worthy recipients. Charity performed with expectation of return, with desire for fruit of results, or in a grudging mood is said to be charity in the mode of passion. So if you become grudging because you're giving charity, then you're giving in the mode of passion. You're not even giving in the mode of goodness anymore. And charity performed at an impure place, improper time, to unworthy persons without proper attention and respect is said to be in the mode of ignorance. And Prabhupada concludes by saying, give it all for Krishna consciousness, right? It's not here. Somewhere else he says that. In other words, give it all to Krishna consciousness. But yeah, as a grihasta, you do have a duty to give charity, to support the poor people. And that story is there in the grihasta. Guru Maharaj told that story, right, for you? How the person, you have to go out in the street and call 3 times anyone hungry. And some people have commented it's very difficult to do that in these days. But you have to take the principle that your duty is to distribute prasadam. Right. Thank you, Mataji. Okay, thank you. All right, anyone else want to comment? Does not looks like it. Does not looks like it. Okay, we got to almost 8 o'clock. We can finish this class. Yes, Mataji. Thank you. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha paditanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. All right, thank you. So next week, what should we do? Next week? Yes, Mataji, we'll have the class. Okay, we'll start on the next verse, the next verse 5, which is also about how to associate with people. All right, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you.